हॅलो 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 मॅम. आवाज येतोय का? हो मॅम. हॅलो येतोय मॅम. हॅलो आवाज येत हॅलो नाहीये. एम आय ऑडिबल और नॉट? येतोय मॅम. आवाज येतोय. मला तुमचा येत नाहीये. हॅलो कोणीतरी बोला, आवाज येतोय की नाही? हॅलो मॅम, आवाज येतोय का आमचा? येतोय आता मला मॅम. आला. बाकीच्यांनी रिस्पॉन्ड करा, येतोय की नाही आवाज? हो मॅम येतोय. येतोय मॅम. ठीक आहे. स्क्रीन दिसते? हॅलो हो दिसते मॅम. ठीक. So today we will start with again the law of palliation. We know this is the temporary relief, and yesterday we have seen the different examples of the palliation. So now today we will start with the another example of palliation. Which example we have seen yesterday? Up to this, we have seen the example of involuntary urination, then the insomnia, then pain. काल कोणता एक्झाम्पल बघितलं? Which example we have discussed yesterday? Where we are in a confusion, whether we have to do the palliation or this case is curable. Which example we have seen yesterday? ऑल्टरनेटचं होतं ना. Yes, alternating. काय म्हटलं दीपक? ऑल्टरनेटिंग डिसीज. मला ऑल्टरनेटिंगच्या पुढे ऐकूच नाही येते. मॅम इनव्हॉल्युंटरी युरिनेशन, इन्सोमनिया, पेन. काल कोणतं बघितलं? ऑल्टरनेटिंग डिसीज वाला पाहिलं आपण. हा, ऑल्टरनेटिंग डिसीज वालं. बरोबर आहे. व्हॉट इज ऑल्टरनेटिंग डिसीज? काल काय झालं? काल एक्झाम्पल मध्ये हेडॅक आणि स्टमक एक त्याला अल्टरनेटिव्ह होत असतं ते समर आणि विंटर मध्ये. हेडेक नव्हतं, रुमॅटिझम होतं. सीझन हा. गॅस्ट्रिक कंप्लेंट इन समर आणि रुमॅटिझम इन विंटर. मग काय झालं होतं? कसं एक्सप्लेन केलं याचे रॉबर्टनी? Alteration of symptoms means what? काय होतं ऑल्टरेशन ऑफ सिम्पटम्स? म्हणजे सीझन नुसार काही पिरियड नुसार त्यांचे सिम्पटम चेंज होतात. नाही, म्हणजे आता हेड सिम्पटम्स ऑल्टरनेटली येतात. हा म्हणजे आता ऑल्टरनेटली येतील. कसं पण सीझन वाईज, मंथ, वीकली, आरली, मिनिट वाईज, सेकंड वाईज कसंही ते ऑल्टरनेट होतात. 2 किंवा 3 सिम्पटम्स ऑल्टरनेट होतात. मग दिस इज अ क्युरेबल और पॅलिएबल? क्युरेबल. What precautions we have to take for the curable? प्रॉपर केस टेकिंग. बरोबर. Watch the periodicity if any, and give the medicine which is having the same tendency of alteration and periodicity. बरोबर? येस.
कळलाय का कालचं? हो मॅम. चला पुढचा पॅरेग्राफ घेऊ मग. Who will read this? मी वाचू? वाच. It is sometimes ना? हो हो. It is sometimes true when we have a case with alternating phases or series of symptom groups and we are unable to meet the condition with a remedy that covers all the phases, either because we do not learn of the alternating phases from the patient in the first place or because we don't know of a remedy to meet the condition, that by meeting the symptom groups as they arise in the case itself as we go on, the symptomatologically logy becomes clearer and more distinct so that we more completely meet the conditions as they arise and the patient's condition becomes better as a whole. This is meeting the case by zigzag process, removing the most pronounced and characteristic symptoms by the remedies most similar in each state, but it takes very careful prescribing or we are apart to hopelessly mix the case. This may be done in emergencies or when we cannot find a better method. It serves better as a palliative measure in incurable states than as curative measure in a curable state, and a failure in any one of a series of successive prescriptions may mean the difference between possibility and impossibility of eventual cure. There is far more satisfaction and the case is much more complete if we can get a picture of the whole condition and of the single remedy to meet that condition. Yes. Thank you. So if the alteration of medicine, yeah, the periodicity, if you are not noted very well in the medicine, so what will happen? Yesterday we have left on this note कि we should take the case properly. If you want to palliate the case, if you don't know कि the patient is having the tendency of alteration, then the patient will not get the relief. Yesterday we have seen this. Instead of getting the relief, the patient became worse because you are concentrating only the one part of that alteration of symptom. आपने सिर्फ गैस्ट्रिक कंप्लेंट में या फिर सिर्फ रोमैटिज्म पे ही उसको मेडिसिन दी है. आपने उसका ऑल्टरेशन नहीं पूछा या पेशेंट ने आपको नहीं बताया. वॉट एवर मे बी द रीजन, यू डोंट नो अबाउट द ऑल्टरेशन. सो आपने सिर्फ हाफ पार्ट पे ही उसको मेडिसिन दी है. आइदर गैस्ट्रिक कंप्लेंट में आपने उसको नक्सोमिका दिया है या फिर रूमेटिक कंप्लेंट में आपने उसको रूटा या रस्टॉक्स दिया है या ब्रायोनिया दिया है. वॉट एवर मे बी द medicine you have selected on the basis of similimum. So what will happen? The patient will not get the relief because the patient have a tendency of alteration. But that medicine is not having a tendency. That periodicity is not present in that medicine. Either your lack of knowledge of materia medica or you have not took the case properly और या फिर patient में problem है कुछ कि patient lazy है, patient shy है, patient hypochondric है, whatever may be the patient, वो आपको बता ही नहीं रहा है. So in that case what to do? It is sometimes true when we have a case of alternating phase or a series of symptom groups and we are unable to meet the condition with a remedy that cover all the phases. So alternating case आपके पास आई है which are having the series of symptoms but you don't know and you are unable to meet the that same condition which the remedy will cover it. So उन्होंने यहाँ पे reason भी दिया either you don't learn that alternating phases यानी आपने उसको पूछा ही नहीं है या फिर आपको मेडिसिन ही पता नहीं है. We don't know the remedy to meet this condition. So in both the condition, the blame on us that by meeting the symptom group as they arise in the case itself as we go on. So what should be our first duty? We have to ask the patient about the alternating disease. आपको थोड़ा सा भी doubt आता है, so you have to ask all the symptomatology so that the symptoms will be clear and distinct and you will be able
To complete the picture of the disease, you will get the patient condition better as a whole. जैसे जैसे आप उसको हिस्ट्री पूछोगे कि सपोज पेशेंट गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए आता है, सो यू सिर्फ एक्यूट है ये देख के आपको उसको छोड़ना नहीं है. पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे ना ये हर साल गैस्ट्रिक कंप्लेंट होता है, तो आप उसको छोड़ नहीं देना है वो पॉइंट को. यू हैव टू आस्क ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट गैस्ट्रिक कंप्लेंट, एंड आफ्टर दैट जस्ट आस्क हिम कि by how many days it is repeated, or it is repeated alternately with some other symptom. So in this way the fine shades of alteration you have to ask. पेशेंट हमको बहुत बार बताता है, लेकिन जैसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है कि बाबा मॉर्निंग डायरिया है, या फिर थर्स्ट आपको मिल जाती है, या फिर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाता है कि दिस इज वेरी अनहेल्दी बट इंटेलिजेंट, तो आपको ये समझ में आ जाता है, या फिर इरिटेबल है. सो आप एक बार मेडिसिन आपके दिमाग में आ गए तो आप उसका जो बोल रहा है ना पेशेंट, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, बिकॉज यू गॉट द मेडिसिन एट दैट टाइम. सपोज पेशेंट नक्सवामिका का है, या पेशेंट पल्सेटिला का है, पेशेंट शाय है, या पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रिक है, तो ये एक बार आपको हिंट मिल जाती है, ये सबका ही होता है, एक बार हिंट मिल गई कि वी आर बिजी टू गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट. पेशेंट बोलता है, पेशेंट हमको बताता है बहुत बार कि कभी कभी मुझे गैस्ट्रिक कंप्लेंट के बाद ना हाथ पैरों में दर्द होता है, बट वी आर कंसिडरिंग कि हाँ बाबा ठीक है, पेट खराब है, उसने कुछ खाया नहीं होगा, सो दिस मे लीड्स टू द वीकनेस. तो ऐसा ही वी शुड नॉट टेक इट एज अ ग्रांटेड. पेशेंट जो बोल रहा है ना उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके we can get the alteration of symptoms. It is not very difficult task, but it is your skill how you are taking it from the patient. जो बोल रहा है उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो, एंड दैट्स व्हाई इन द केस टेकिंग वेरी फर्स्ट एफोरिज्म में ही 83-84 में ही हनीमैन ने बोला है कि डोंट इंटरप्ट द पेशेंट. जो उसको बोलना है वो बोलने दो, जो जितना वो आपके साथ बात करेगा, जितना वो पॉइंट्स आपको देगा, दैट विल बी अ बेटर फॉर यू. सो उसमें से ही आपको ये ऑल्टरेशन ऑफ सिम्टम्स मिल जाएंगे. So try to get the better history from the patient so that you will get the whole condition of the patient. This is the meeting case by a zigzag process. अगर ये ऐसा नहीं होता है, if you are not getting the alternating manifestation of या condition उसकी patient की नहीं मिलती है, so that will become a zigzag. अगर आपको similar मिलती है तो वो straight line में cure हो जाएगा. This is imaginary thing ना. मेडिसिन अगर आपकी सेपिया है, आपने सेपिया दे दिया पेशेंट को, पेशेंट फील्स बेटर, पेशेंट विल बी ऑन द ट्रैक ऑफ रिकवरी. लेकिन सेपिया आपको समझ में नहीं आया है, इंस्टेड ऑफ सेपिया यू हैव गिवन द सम अनदर मेडिसिन, तो जिगजैग वे में होगा. पेशेंट को ठीक लगेगा, या पेशेंट 2-3 सिम्टम्स से ठीक होंगे, पेशेंट फिर से एग्रीवेट होगा. सो इन दिस वे जब तक वो पेशेंट को सेपिया नहीं मिलता है तब तक वो हाँ ना में खेलता जाएगा. सो दैट इज अ zigzag process. So we have to remove that zigzag process, and we have to find out the characteristic symptom for that particular remedy, so that the case will not get mixed. Zigzag manner में वो नहीं जाएगी. This may be done in emergencies or when it cannot find a better method. कोई इमरजेंसी है, पेशेंट बहुत ही पैनिक होके आया है कि जहाँ पे आपको ऑल्टरेशन ऑफ सिम्टम्स पूछने का भी टाइम नहीं है, तो ठीक है वहाँ पे आपने उसको पैलिएट कर दिया, so that will become a zigzag method. It serves a better as a palliative measure in incurable cases than a curable measure in a curable states. A failure in any of one of the series of successive prescription may mean the difference between the possibility and impossibility of eventual cure. आपने अगर उसको पैलिएशन किया, इनक्यूरेबल केस समझ के, अगर क्योर वहां पे नहीं हुआ है, दैट मीन्स योर प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट अ सक्सेसिव प्रिस्क्रिप्शन. यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द क्योर, इसीलिए ये जानना जरूरी है. इन केस ऑफ इमरजेंसी ठीक है, यू आर डूइंग द पैलिएशन, बट जहाँ पे आपको टाइम है, द पेशेंट इज नॉट इन थर्ड डिग्री, या फिर पेशेंट ठीक हो सकता है, क्यूरेबल है, सो वहाँ पे पैलिएशन नहीं करना चाहिए. There is more satisfaction and the case will become more complete if we get a better picture of the whole condition of the patient and single remedy we can get. So पूरे की पूरा जो base है, that is your case taking. तो alteration का भी
जो solution है that is only your case taking. So what he said, कि sometime it is happen कि you are not getting the whole picture. So there the cure may be in a zigzag manner. And in case of emergency, there may be the palliative measures you can use. But the curative measures, अगर आपको full condition उसकी मिलती है, so this curative measure is more better than the palliative measure. Try to get the whole history, try to get the alternating history of from the patient. Give the similar medicine, give the single medicine so that you will be more away from the palliation. ठीक है? येस मॅम. सेकंड रिझन त्यांनी इथे सांगितलं आहे की दॅट इज मोस्ट कॉमन की इफ द फिजिशियन इज यंग, इफ ही डोंट नो द मॅथमॅटिको और रेपेटरी, देन व्हाट टू डू? कोमल रीड. Yes, ma'am. This may be difficult from two angles. The young physician may find it difficult to do this work carefully because he lacks the knowledge of materia medica. But he has at his command a wonderful source of help in his repertories, which will often serve his purpose by quick reference, filling in the knowledge that he lack of the remedy. Another possibility is that of the remedy relationship and the relationship of the various inherited dis डिस्क्रेसिया, dis- डिस्क्रेसियाज. dis- discrepancies to the case. These are a large subject in themselves and will be discussed elsewhere. Again, it is a very possible that the remedy covering the case has not been proven fully or may not have been taught by the student of materia medica. Okay, thank you. So second angle is that if the physician is young, if he is a fresher, then he find difficult to work carefully because he has a lack of knowledge of materia medica. But he has its command on wonderful source of help of his repertories, which will often serve his purpose by the quick reference. So if you don't have a knowledge of repertory, but you are master in the, sorry, don't have a knowledge of that much knowledge of materia medica, but you are well enough with the knowledge of the repertory, then this knowledge will again suffice to take the history from the patient. Because कि रेपेटरी में क्या होता है कि यू आर हैविंग द रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स, तो वो सब रूब्रिक्स से यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, if there is vomiting, if it is there, then vomiting is the main rubric. Under that vomiting rubric, sub rubrics are given. So many sub rubrics are given in different repertories. तो केंट रेपेटरी से अगर आप जाओगे, so that it will start with the day. मॉर्निंग है यानी टाइम मोडालिटी वहां पे पहली आएगी कि मॉर्निंग में है, इवनिंग में है. मॉर्निंग में उन्होंने फिर टाइम भी दिया है, whether it is in the early morning, dawn, या फिर टाइम मोडालिटी वहां पे दी है 9 AM, 10 AM. In this way he has given. After the time he has given the position. After that he has given the color, taste in the mouth. So all the छोटे छोटे rubrics ना आपको मिल जाएंगे. So on the basis of, और वहां पे alternating का भी एक आता है, vomiting alternating with, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा. या फिर सीजन की एक मोडालिटी वहां पे है विद द वोमिटिंग. आफ्टर दैट दे आर ऑल्टरनेटिंग विथ हेडेक भी है, ऑल्टरनेटिंग विथ नोशिया भी है, ऑल्टरनेटिंग विथ रूमेटिज्म भी है. तो ये आपका रेपेटरी का भी नॉलेज है. सो यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चंस एंड इन दिस वे यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो जैसे मैंने कल ही कहा था कि ऑर्गेनॉन, मैथमेटिका एंड रेपेटरी, these are the three pillars which are helpful for the case taking. तो ठीक है, इतना मैथमेटिका का नॉलेज नहीं है, बट यू आर वेल एक्वेंटेड विद द रेपेटरी. जो सॉफ्टवेयर आपके टेबल पे रखा है उसको भी अगर आपने फॉलो किया, सो दैट इज नॉट मच डिफिकल्ट. तो ये केस पैलिएशन में नहीं जाएगी. It will feel the knowledge which lack of that remedy. Another possibility is that the remedy relationship. दूसरी एक possibility उन्होंने दी है कि if you don't know the remedy relationship and the relationship of the various inherited diseases to the case,
There are the large subject themselves and we'll discuss elsewhere. So this is the relationship of the remedy is the another thing कि अगर आपने रस्टॉक्स दिया है तो वहां पे आपको एपिसमेल नहीं देना है बिकॉज इट्स इनिमिकल. सो ये रिलेशनशिप भी पता होना जरूरी है. रस्टॉक्स ऑल्टरनेटिंग ऑफ सिम्टम्स फॉलो करता है तो रस्टॉक्स दिया तो वो गैस्ट्रिक कंप्लेंट कवर कर लेगा. अगर आपने वहां पे उसको एकोनाइट दिया है दैट विल अगेन कवर. सो दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी भी यहाँ पे पता होना जरूरी है. अगेन इट इज पॉसिबल दैट द रेमेडी कवरिंग द केस हैज नॉट प्रूव्ड फुल्ली but may not have thought by the students of materia medica. जो proven medicines है वही medicine हमको देनी है. If you are giving the unproved medicine or the second degree, third degree of medicine, so it will not give you the proper result. So youngster में दो problem आते हैं. Either कि their knowledge of materia medica is not proper, but if you are having the knowledge of repertory, that problem will again get solved. Second thing is that कि the relationship of remedies. अगर वो भी पता नहीं है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप थोड़ा गलत मेडिसिन वहां पे चूज कर सकते हो. लेकिन उसका भी सोल्यूशन क्या दिया है एच ए रॉबर्ट ने कि टेक आउट द प्रूव्ड मेडिसिन. कि उसका रिलेशन थोड़ा बहुत हमको पता रहता है. जो प्रूव्ड मेडिसिन है वो दो सो दैट इट विल कवर. या फिर पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन वहां पे दो सो इट विल कवर ऑल द system of the patient. So this will not create a much disturbances in the patient. So in this way he has given all the shades for the alternating disease. कि alternating phases आपको पता नहीं है so you there may be the zigzag manner of cure. लेकिन अगर आपको alternation of history मिल जाती है so give the single medicine. Then take the case properly so that वो अल्टरनेशन का प्रॉब्लम आपके सामने आएगा ही नहीं. देन उसके बाद उन्होंने कहा इफ इट्स अ यंग फिजिशियन हु मे हैव द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, लेकिन उसको भी उन्होंने ओवरकम किया है बाय यूजिंग द वेरियस रेपेटरीज. दूसरा प्रॉब्लम एक आया था रेमेडी रिलेशनशिप अगर पता नहीं है सो गिव द मेडिसिन व्हिच इज फुल्ली प्रूव्ड. सो इन दिस वे ही हैज गिवन all the solutions which we face in our OPD. Clear? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Niranjan, what say? Now the next example which is related to the mechanical injuries. Niranjan is here. Priyanka, Pratiksha. Yes, ma'am. Read this. In the case of mechanical injuries, In a case of mechanical injuries where there is much pain and which would be subject to narcotic or sedative treatment under ordinary medicine, the homeopathic physician has a group of vulnerable हाँ, remedies that will not only allay the pain and distress incident to traumatic condition, but traumatic condition will prevent conjunctive, suppurative or gangrenous process and actually will hasten healing. Where narcotics will narco, narcotics will deadening the pain in wide structure changes by slowing the natural recuperative power. In this case, we may mention such remedy as arnica, hypercum, Lidum. ledum, nitrum, sulf, ruxtox, and ruta. Each of those Highest.
ठीक आहे, नेटवर्क गेलं वाटतं. Okay, so the next example is related to the mechanical injury. कि यहाँ पे भी the patient became panic. He also became a panic because of the pain of that injury. एक second ना. Hello. Hello, ma'am. Yes, हॅलो. ma'am. हां, माझं कनेक्शन गेलं होतं मध्येच. ओके, सो इन केस ऑफ मेकॅनिकल इंजुरीज तिथे खूप पेन असतं. आता मेकॅनिकल इंजुरी म्हणजे काय? इंजुरी तुम्ही शिकताय मध्ये. हो. ऍक्सिडेंट वगैरे झालं तर बरोबर आहे. मे बी गाडीवरून होतो, झाडावरून पडल्यावर होतो, जिन्यावरून पडल्यावर, कुठूनही पडल्यावर जे काही आपल्याला लागतं दॅट इज द इंजुरी. कट म्हणजे तुमचा वेपननी पण होऊ शकतं. सो दिस लीड्स टू द पेन अँड दिस लीड्स टू द पेशंट बिकेम पॅनिक विच वुड सब्जेक्ट. मग आता इथे काय करू शकतो आपण, परत इथे त्यांनी 2 व्ह्यूज सांगितले. आयदर यू कॅन गिव्ह द नार्कोटिक्स और यू कॅन गिव्ह द सिडेटिव्ह ट्रीटमेंट बाय द ऑर्डिनरी मेडिसिन. द होमिओपॅथिक फिजिशियन हॅज अ ग्रुप ऑफ व्हल्नरेबल रेमेडीज. पण आपल्याकडे खूप अशा व्हॅल्युएबल रेमेडीज आहेत which not only decreases the pain but this will decreases the distress incident to traumatic condition. पेन तर कमी करतातच, पण त्याच्यासोबत बाकीचे पण जर काही मेंटल ट्रॉमा असेल किंवा भीती वाटत असेल तर ते पण डिस्ट्रेस our medicine will get relieved. That will not only allay the pain, it will decreases the pain and distress incident to the traumatic condition. But will prevent, त्याच्यासोबतच काय करतात, they will prevent the congestion, suppuration and the gangrenous condition. Congestion म्हणजे काय? What is congestion? अरे आवाज येत नाहीये का? What the homeopathic medicines are doing, that they are not only relieving the pain and distress but they also prevents congestion. What is mean by congestion? बोला ना. अरे पॅथॉलॉजी शिकता आहात आणि कंजेशन नाही माहिती. हॅलो. हाँ मैम. हॅलो. परत डिस्कनेक्ट झाले होते. बोला, कंजेशन म्हणजे काय? Ma'am means accumulation of fluid. नाही ग, कंजेशन म्हणजे रेडनेस. अच्छा. ब्लड सप्लाय तिथे जास्त होतो, ते झालं कंजेशन. सुपुरेशन म्हणजे काय? हम्म. पस तयार होतं पस. बरोबर. आणि गँग्रीन म्हणजे काय? ऑक्सिजन सप्लाय काहीच होत नाही तिथे. इश्चेमिया, नेक्रोसिस आणि मग गँग्रीन. बरोबर आहे? हाँ. हो.
मग हे सगळं प्रिव्हेंट करते आपली मेडिसिन. सो इट नॉट ओनली डिक्रीजेस द पेन बट इट ऑल्सो प्रिव्हेंट्स कंजेशन, सुपुरेशन अँड गँग्रीनस कंडिशन. दॅट मीन्स दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ इंजुरीज. सो दॅट आवर मेडिसिन्स विल अगेन ओव्हरकम किंवा हे सगळं कव्हर करते ती. ॲक्च्युअली विल हेस्टन द हिलिंग आणि हिलिंग प्रोसेस पण फास्ट करते. वेअर ॲज नार्कोटिक्स जे आपण घेणार आहोत ते काय करतं, डेडनिंग द पेन, इन्व्हाइट द स्ट्रक्चरल चेंजेस. पेन ते कमी करेल पण ते काय होतं तिथे स्ट्रक्चरल म्हणजे मार्क तिथे राहून जातो. बाय स्लोविंग नॅचरल रिकर्पेटिव्ह पॉवर्स म्हणजे रिस्टोरेशनची जी पॉवर असते ती स्लो करते ही नार्कोटिक्स. रिकर्पेटिव्ह पॉवर म्हणजे रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. तर ती पॉवर जी आहे इट स्लो डाऊन बाय द नार्कोटिक्स. इन दिस क्लास वी मे मेन्शन सच रेमेडीज. मग इंजुरी करता मी तुम्हाला एक हे दिलं होतं का इंजुरीचं चार्ट, फ्लो चार्ट दिलाय का मी तुम्हाला इंजुरीचा? अर्निका कधी यूज करतो, हायपरिकम, लिडम्पाल, नायट्रॉन सल्फ आपण कधी कधी यूज करतो ते? नाही मॅम. बरं मग देते, नाही मॅम. नसेल दिला तर मी देते तुम्हाला. सो दिस इज द इंजुरी मेडिसिन्स ॲट कंपोजिटिया फॅमिली. मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं ना. सो दीज आर द मेडिसिन्स विच बिलॉंग्स टू द कंपोजिटिया फॅमिली. दे आर युजफुल फॉर द इंजुरी. पुढे रस्त्यावर जर का ॲक्सिडेंट होऊन पडलाय, ब्लिडिंग होत आहे, तर ॲटलिस्ट आपण तिथे फर्स्ट एड देऊ शकतो. मग तो खूपच घाबरलेला असेल तर तिथे आपण आर्निका द्यायचं. ब्लिडिंग जास्त होत असेल तर किंवा नर्व इंजुरी असेल तर हायपरिकम देऊ शकतो, लिडम्पाल देऊ शकतो, सिम्फायटम देऊ शकतो, रस्ट्रॉक्स देऊ शकतो. सो दीज आर ऑल द मेडिसिन्स विच नॉट ओनली रिड्यूस द पेन पण बाकीचे पण कॉम्प्लिकेशन्स बऱ्याप्रमाणे आपण कव्हर अप करतो. सर्जरी नंतर कोणती द्यायची, लिगामेंटल टियर असेल तर काय द्यायचं, लिडम्पाल द्यायचं की रस्ट्रॉक्स द्यायचं, हे इंजुरी मेडिसिन जेव्हा आपण वाचू तेव्हा कळेल. Each of the highest usefulness when indicated. These remedies cannot be used successfully at random any more than in other condition, but when they are similar to the condition, they are inestimable benefit. So if your medicine is perfectly similar, then this will give you inestimable benefit. म्हणजे तुम्ही विचार पण करू शकत नाही इतकं छान क्युअर त्या पेशंटमध्ये होतं. सो इट विल नॉट रिड्यूस द पेन पण कंजेशन, सुपरेशन, गँग्रीनस कंडिशन पर्यंत पेशंट जाणार नाही कारण ते एका मागून एक सिरीजच आहे. ब्लिडिंग लेस झालाय, सो दिस लीड्स टू द इशेमिया, मग दिस लीड्स टू द नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मे लीड्स टू द गँग्रीनस कंडिशन आणि याच्या मध्ये मध्ये सुपरेशन, कंजेशन फेजेस येतात. तर हे काहीच त्याच्यामध्ये होणार नाही इफ युअर मेडिसिन इज प्रॉपरली सिमिलर. So whenever there is an injury, this is again a curable case. This is not a palliation. Don't think of palliation here. Select the proper medicine from Compositia family or any other injury medicine and you will get the better result from the patient. ठीक आहे? Yes, कळालं ma'am. मेकॅनिकल इंजुरीज? हो मॅम. So this is a palliable or curable? Curable. ऑर्डिनरी मेडिसिन्स मध्ये काय देतात? Narcotics. Narcotics. Sedative. What happen by giving the narcotics? While they are deadening the pain, they invite the structural change.